Hello learners, I am here with part 5 of series completion, verbal reasoning series completion, number series. So this is part 5. Here in this series in this session we'll be actually dealing with this number series which are related to the squares and cubes. So there are many times in the series you will get to see that the logic that goes is on the basis of the squares and the cubes of different numbers. So let us try to see what goes here. So basically I have kept here 1 to 30 squares and cubes. For any kind of competitive exams, I think if you are willing to, speed is very important, you know that very well, right? So speed तभी आएगी जब आपको squares और cubes याद होंगे. It is not possible कि आप उस time पे calculate करने बैठो तो you will lose time there. So definitely speed चाहिए आपको. इसलिए कम से कम ये ज़रूर ध्यान रखें कि 25 तक के squares, 20 तक के cubes हों. 25 तक के दोनों हों तो और भी अच्छी बात है, right? थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन हाँ, this will be fruitful because the moment you remember these squares and cubes, it becomes much easier because you are able to see the moment you see the series. अगर आपको याद है squares और cubes तो आपको कभी-कभी एकदम से दिखने लग जाता है कि हाँ लॉजिक squares या cubes की है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में ऐसा तो आएगा नहीं कि हाँ ये squares और cubes से रिलेटेड क्वेश्चन है. So how do you guess? You are able to guess only when you have, like, you already have an idea what are the different squares, what are the different in different cubes, so you are able to actually guess there. So always better to remember squares and cubes. At least 25 तक के तो आपको याद रहने ही चाहिए, both the squares and the cubes, right? Now let us move forward with the questions. So if you see this question, now this is numbered as question number 33 because we have done 32 questions in our previous different sessions. So this is the fifth session. You can see here 1, 9, 25, 49 question mark and then 121. I hope you all understand this, right? Why? Because इतना तो हमें पता ही है, ये squares तो हमें पता है, शुरू के squares हैं. So you can see that all of these are squares, right? अगर ऐसा आपको एकदम से नहीं दिखता कि ये squares और cubes हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपको squares और cubes अभी शायद याद ना हो, लेकिन ये तो दिख ही जाता है एकदम से. अगर नहीं देखेंगे ये तो फिर आप इसको you'll try to find the differences, and if you try to find difference and then attempt this question, it'll take a lot of time, right? You'll try to find the difference, then you'll find that difference तो नहीं हो रहा है, then you'll find something else, और फिर शायद आप you will stumble upon squares and cubes. So आपको squares और cubes अगर एकदम से याद हैं तो you will be able to see that this definitely all of these numbers are squares. So let us try to see. This is, you know very well, this is 1 square, this is 3 square, 9 is 3 square, 5 square is 25, 7 square and then 11 square, right? So 1, 3, 5, 7. बहुत clear pattern दिखाई दे रहा है यहाँ पे. This should be 9, right? दो like alternate numbers का square है. So this should be 9 square, 81. So this is very clear. Now let us come to the next question. As I told you, please always try to find out the answers yourself. So stop this video and then you can try out the series completion yourself. पहले खुद try करो और उसके बाद फिर then listen to the explanation. That will always help you because अभी तो आपको काफी number series की आदत हो गई होगी. So now try to first stop the video, do it. Okay, let's see. This is 0, 2, 8, 14, then a question mark and then 34. Let's see. Apparently तो कोई squares नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे. So let us squares भी नहीं और cubes भी नहीं दिख रहे हैं. Let's try to find out what may be the answer here. Okay, so the obvious choice is we will try to find the differences. Let's see that. It is plus 2, plus 6, plus 6. और तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है. But this does not make much sense. इससे कहीं भी कोई सीरीज तो नहीं दिखाई दे रही है. So let's see what else can be there. ये हमने देखा कि डिफरेंसेस से हमको कोई भी लॉजिक नहीं दिखाई दे रही थी. Now if you see here 14, 34, हम क्यों इस लॉजिक पे आए हैं? सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि why are we trying this?
You may be thinking because ये जो सेशन है ये स्क्वायर्स और क्यूब्स का है इसलिए हम स्क्वायर्स पे ही सीधे आ गए या क्यूब्स पे आएंगे, लेकिन पहले हमेशा ये समझना चाहिए कि why are we trying out squares or cubes here? Why are we not? Why that should come to our mind that this may be a series which comprises of squares or cubes. Now see this 34, this is 14. So ये आसपास है squares या cubes के, right? इस केस में स्क्वायर्स के 8 itself, like अगर आप 8 सोचो तो 8 तो खुद अपने आप में एक क्यूब है, right? लेकिन 14 it is nearer, it's very near to 16. 34 is near to 36, right? 8 is a cube, 8 is a cube, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब 8 जो है क्यूब भी है लेकिन 8 9 के आसपास भी है, and 9 is a square. So if you just see 14 16 के पास है, 34 36 के पास है, 8 9 के पास है, ये तीन 9 16 और 36 ये स्क्वायर्स हैं. So that is why we can try to see is there any kind of a relation of these numbers with these squares. So 36 अगर हम इसको 36 के आसपास मानते हैं, so 36 minus 2, 14 यहाँ पे है, 16 के पास है, 16 minus 2, ये दोनों minus 2 हो रहे हैं. अगर हम स्क्वायर्स ही देख रहे हैं तो फिर क्या होगा, 8 is 9 minus 1. Now 2 is what? किसी का स्क्वायर अगर हम देखें उसके आसपास में, so either it may be related to 1 square which is 1 or it may be related to 2 square which is 4. So यहाँ हम सभी में स्क्वायर्स देख रहे हैं, यहाँ -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, right? So let us try to see here. अगर हम इसको 4 - 2 करते हैं, एक 2 का स्क्वायर -2 करते हैं, then this will be 1 का स्क्वायर -1. If it is 0, if you remember I had told you before also कि 0 अगर आता है तो this may be either a number multiplied by 0 or it may be a number subtracted from itself. So it may be 1 minus 1, it may be 2 minus 2 also. लेकिन अगर आप यहाँ देखो 9 minus 1, 16 minus 2, 36 minus 2, right? So हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं कि -2 -1 स्क्वायर से ही ले रहे हैं. यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, right? 16 is 4 square, 9 is 3 square, so this must be 2 square, 3 square, 4 square, so this must be 2 square. इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लेके, मतलब 2 is near to 4 also, 2 is near to 1 also, 1 is also square, 4 is also square. लेकिन हम क्यों 4 यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ पे 4 makes more sense because this is 4 square, this is 3 square, so this should be 2 square and this should be 1 square. तभी हम कुछ सीरीज के बारे में सोच सकेंगे. So अगर ये 1 square है, this first one, so it should be 1 square minus 1, then only 0 comes. This comes as 2 square minus 2, okay, that is 2. Then 3 square again minus 1. Now if you see here, this also makes sense. यहाँ 1 square minus 1 है, यहाँ 2 square minus 2 है, 3 square minus 1, 4 square minus 2. This is 6 square minus 2, right? So this one should be 1, 2, 3, 4, so 5 square. This is -1 -2, -1 -2, so this should be -1, and then this is obviously this is -2. So this can be 5 square minus 1, which means how much, right? How much it is? It is 25 minus 1, so 24, and we have 24 as an answer. I hope you have got this, the logic behind this. 0, 2, 8, 14, 34, ये थोड़ा सा इनिशियली आपको ये लगेगा कि क्योंकि हम स्क्वायर्स और क्यूब्स की ही बात कर रहे हैं इसलिए we have come to this, but no, you have to see that these numbers are near to squares, and because these numbers are nearer to squares, so you can see that this logic may work, and when you see, it actually works. Let's take some more questions here. Now 0, 6, 24, 60, 120, 210, and then question mark. So let's try to figure out. You can always stop the video and then try. Let's see how much is this. The differences, that's the first thing that comes to our mind, as I told you before also, right? So let us try to find out differences.
6. So this is plus 6 plus 18 plus 36 plus 60 plus 90. Okay, if we see यहाँ पे कुछ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ these may be multiples of something, right? So इसमें हम फिर से अगर differences देखते हैं तो हमको कुछ pattern दिखाई दे सकता है. So let us try to see some some patterns here. The differences again, that means, so 6 और 18 के बीच में there is a difference of 12, then plus 18 plus 24 plus 30. अब हमें पैटर्न दिखना थोड़ा शुरू हो रहा है. कैसे हो रहा है? Again let us try to see the next one कि इसके बाद हम क्या करेंगे. Let us see the difference between these numbers also. So now when you see the difference, it is very clear. The difference is that of plus 6 for all. तो ये तो बहुत क्लियर हमको दिखाई दे रहा है. Now see, there is nothing like a square or something, right? Let's try to find out now what will be the answer here. So plus 6 plus 6 plus 6, तो इसमें भी हम plus 6 करेंगे, so plus 36 हो गया. Plus 90 में हम plus 36 करेंगे, plus 126 हो गया. Again, so 200, ये भी आंसर नहीं है. Please always write it like this so that you're not making a mistake. The answer will be 210 plus 126, which is 336. So that is what gives you the answer, right? इसमें आपने squares या cubes नहीं देखे हैं. Let's see. इसमें आपका आंसर विदाउट एनी स्क्वायर्स और विदाउट एनी क्यूब्स आ गया. क्यों? क्योंकि आपने डिफरेंसेस निकाले, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे गए, आप उसके भी नेक्स्ट लेवल पे गए. सो यू हैव गॉट अ वेरी वेरी क्लियर, यू कैन से, पैटर्न हियर. लेकिन यही क्वेश्चन एक्चुअली दूसरी तरह से भी किया जा सकता है. दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन केप्ट हियर, राइट? ये क्वेश्चन स्क्वायर का भी है, स्क्वायर का एक्चुअली नहीं है. अगर आप देखें यहाँ पे, so 0, 6, 24, 60, 120, 210, ये नंबर्स भी स्क्वायर्स नहीं लेकिन क्यूब्स के आसपास हैं. स्क्वायर्स के भी पास हो सकते हैं, आप सोच सकते हो उसको कि स्क्वायर्स के पास हैं. जैसे 6 है, right? 6 is near to 4, 6 may be near to 9 also, right? 24 is near to 25, right? But it may be near to 27 also. 60 is definitely, it is near to 64. 120 is near to 121 also, 125 also. 125 is a cube, 121 is a square, right? इसी तरह से 210 is near to 216. So ये एक चीज आपने देखी यहाँ पे हो सकती है ऐसी. लेकिन अगर हम इसमें देखें, 60 is near to 64. 64 is a square also, it's a cube also, right? 24 is near to 25 or 27. 27 is a cube, 25 is a square. Okay? So आपको यहाँ पे figure out करना पड़ेगा कि ये किसके पास है, पैटर्न किससे बन रहा है. I am leaving this to you, right? लेकिन फिर भी एक बार में हल्का सा मैं आपको आइडिया देना चाहूंगी. That if you, this is just a hint that I am giving you. Try to find out this answer with cubes. 216 minus something, 125 minus something, 64 minus something, 27 minus something, 8 minus something, right? And then 1 minus something. Try doing this same question with the logic of cubes, using cubes here. You will be able to do that. Okay, so the same question can be done using different ways. तो ये यहाँ पे आपने जो आंसर निकाला है उसमें आपने कोई स्क्वायर्स और क्यूब्स नहीं देखे, लेकिन द सेम क्वेश्चन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पुटिंग क्यूब्स हियर. मैंने आपको हिंट दे दिया, यू ट्राई इट योरसेल्फ, राइट? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, moving to the next one, right? This is the same question. Hope you are getting this. I'm not explaining it, I've already explained this to you, so just try doing this. This way also you get the answer. So you should be very clear what should come here, right? 7 cube minus 7. Try doing this. So the same question can be done using different methods. Let's move to the next question. See, 67, 103, 147 and 199. Here also you should be able to see some pattern. Why? Because these are near to some
squares, right? Think of it. 67 is nearer to what? 103 is near to what? 147 may be near to what? And 199. Let's see. So 67 is 64 plus 3. 100 103 is 100 plus 3. So ये इन दो से बिल्कुल क्लियर आ रहा है. यहाँ भी 144 plus 3 and this is 196 plus 3. When we add 3 to all these are all squares plus 3. Okay, these numbers are all squares plus 3. Actually, there should have been a question mark here. मतलब आपको next what comes next in the series निकालना है. Question mark is not put here, but yes, it is understood. We want to know the next one. So these are all squares, right? 8 square, 10 square, 12 square, 14 square. So the next should be which one? 16 square. Okay, so 16 square plus 3 and you can find the answer. This is what the answer is. I hope you are able to get a grasp of it, how to go about finding like looking for something, some pattern in the series. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें आसपास में सभी नंबर्स के आसपास में अगर स्क्वायर कोई दिख रहा है या क्यूब कोई दिख रहा है, ऐसा नहीं कहीं स्क्वायर कहीं क्यूब दिख रहा है, राइट? अगर एक ही तरह की चीज दिख रही है तो फिर देन ट्राई टू फाइंड आउट दैट, बिकॉज मेनी टाइम्स नंबर सीरीज में स्क्वायर्स और क्यूब्स को यूज किया जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. You can always stop the video and then start finding out yourself. So here also what I have told, try doing that, right? Let's see how you go about it. Now if you see here, the basic thing is here, we'll first try to see, क्योंकि एकदम से तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले तो यही लगेगा कि चलो differences find out करते हैं. So we are trying to find out the differences here, right? If we try to find these differences, शायद हमें कुछ इससे पैटर्न नहीं दिख रहा, तो हम दूसरी चीज पे आते हैं. Let us now again see that these are all near to something. 120 near to 121 or 125. 125 is a cube, 121 is a square. 24 is near to 25 or 27 both. 6 is near to 4 also, 8 also, 9 also. अब आपको ये देखना है कि सभी चीज ऐसा क्या है. So up to this fine, but 210 को अगर आप देखते हो तो 216 के पास दिखता है, right? Which is a cube. 336, if you try to see, it is nearer to 343, which is again a cube. 512, right? A cube. So 512 में से कितना 8 माइनस करते हैं तो ये आता है. So this if you try to figure out, ये सभी अगर हम क्यूब से ये numbers माइनस करेंगे, we are getting a very clear pattern here, right? ये सभी क्यूब्स हैं, ये सभी numbers descending जा रहे हैं जिनको subtract किया जा रहा है. So हम 512 minus 8, 343 minus 7. This way if you try to find the series, you will be able to guess very clearly. So what is 512? 512 is 8 cube. This is 7 cube. This is 6 cube. 5 cube. Right? So how are you getting? अब you may be thinking कि ठीक है आपको ये लिंक ये बताया जा रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि this may be the pattern that you are finding, but why you may not be able to guess the pattern on your own. Why that is happening? Because you may not have learned the squares and the cubes. If you have a very clear idea about the different squares and cubes, this you will be able to see that yes, these links these numbers are near to some squares or some cubes. तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी ही है कि आपको जैसे लास्ट सेशन में प्राइम नंबर्स बताया था, तो प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, तभी आपको वो दिखेगी, आपको ये दिखेगा कि हाँ यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं. यहाँ पे भी आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए, तभी आपको किसी सीरीज में दिखेगा. दैट विल गिव यू एन आइडिया दैट यस यू कैन ट्राई आउट दिस सीरीज विद आइदर स्क्वायर्स और क्यूब्स. अदरवाइज अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको खुद से दिखेगा नहीं. सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, so the pattern is absolutely clear. 5 cube minus 5, so this should be what? It should be 4 cube minus 4, right? So if we see 4 cube, it is 64, minus 4 is 60, and we have answer as 60. I hope you are getting a hang of it, right? But before that, in fact, I would request all of you that you should be
remembering the squares and cubes before trying out these questions. That will help you more. Okay, let's move to the next one. Here also now try to find out what these numbers may be like. 221, 252, 285 and 320. The first thing that comes to our mind is to find out the differences. So let us find the differences. If you find the differences here, it is 31, 33, 35, 37. What does it show to you? Right? Is there anything that you find here? Very clearly. 31, 33, 35, 37. So next one should be what? Right? Actually 31, 33, 35. So ये तीन दिए हुए हैं तो नेक्स्ट आपको 37 ऐड करना है यहाँ पे और 357. You may be thinking where are the squares and where are the cubes. No, this is a very simple one, not requiring a square or a cube. Just you have to find the difference and you found the answer. So nothing like a square or a cube here. Okay, but just you don't have to go for squares and cubes even when you are getting the answer here, right? So यहाँ तो सीधे दिख रहा है, आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है. This is a very clear cut differences से ही answer आ जा रहा है, right? The same question can also be attempted like this, right? That is why that question was there. So, but you saw that आराम से difference निकालते ही answer आ रहा है. Although here also if you see 221 is near to 225, right? Again 252 is nearer to 256. So 225 minus how much? 4. 256 minus 4. 289 minus 4. 324 minus 4. अगर आपको अच्छी तरह से squares याद हैं, so you can easily see that these are numbers which are nearer to squares and you can get this, right? So यही same question आपका square से भी हो सकता है, यही same question आपका just the difference you found and you got the answer. So दोनों तरह से हो सकता है. That is why this question has been kept here. So whatever आपको एकदम से डिफरेंस देख के समझ में आता है तो वो कर दो, और आपको देखते ही अगर स्क्वायर समझ में आते हैं कि हाँ ये स्क्वायर के पास है और बहुत क्लियर दिख रहा है कि स्क्वायर -4, तो आप उस तरह से भी आंसर निकाल सकते हो. दिस इज 18 square minus 4, so the next one will be 19 square minus 4, which is 361 minus 4, so 357. It's the same way. Okay, so this is how you can do the same question in different ways. Let us see this question now. Here also our first attempt will be to find out the differences. Let's see that. डिफरेंस निकाला आपने, +10 का निकला, +24, +44, +70. आप अपने आप से कर ही रहे होंगे. I am sure I don't have to remind you every time that you have to put your video, like stopping the video for some time, and you should try it yourself. Now next इसमें देखते हैं तो 10 +14 +20 +26. Sorry. So you see that this is a clear, like the difference here again makes things a little clearer. थोड़ा सा आपको पता चल रहा है कि ये डिफरेंस जब आ रहा है नेक्स्ट लाइन में तो आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है पैटर्न, और ये पैटर्न क्या है? बहुत ऑब्वियस है, +6 का ही डिफरेंस है यहाँ इन तीनों में. तो यहाँ पे भी अगर हम +6 का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों में +6 का डिफरेंस तो यहाँ भी निकालेंगे, तो 26 + 32, राइट? Sorry, plus 26 plus 6 will be plus 32. So 70 में आप 32 ऐड करेंगे तो 102, and so 150 में अगर 102 ऐड करेंगे तो 252. So you have to move 3 steps in order to get this thing. But think of it, the same question has another logic also, right? We'll try another logic also. अगर आपको ये लगता है तो इससे भी करिए, कभी-कभी it takes time, right? So let's see what is the other logic here. If you see the same question, this is 1 into 2. 12 is also, you can write it as 4 into 3. You can write 36 as 9 into 4, 80 as 16 into 5, and 150 as 25 into 6. Right? If it strikes to you, you can do something like this. This is into 2, into 3, into 4, into 5, into 6. But what? 1 into 2, 4 into 3. Now what is 1, 4, 9, 16 and 25? These are all squares, right? And that is why this is a very clear series. So अगर ऐसा है 5 square into 6,
So the next one will be what? You must get an idea here. This will be 6 square into 7, which is equal to 36 into 7, 252. This gives you the answer. Okay, so the same question which took 3 steps, if it strikes to you, then it is much, you can say, faster to attempt this question this way. But yes, it should strike to you. Okay, so that is another thing. Now coming to the next question, let's see what the next question is. इसको आप निकालने की कोशिश करो. This question is quite dear to me, क्योंकि इससे एक नई चीज पता चलती है कि आपको क्या देखना चाहिए. Now this series, if you see 6, 20, 36, 48, 50, then what should come in then? 0. This is slightly weird. थोड़ा सा weird है ये कि ये सीरीज आराम से बढ़ रही थी, एकदम से क्या हुआ कि यहाँ पे 0 हो गया. Right? So let me give you a hint on this. जब भी ऐसा लगे आपको किसी सीरीज में numbers बढ़ रहे हैं, एकदम से कैसे 0 आ गया. So if you remember, I had told you before also that when do you get a 0 in a series? Either when you have a number subtracted from itself, or when you have a number multiplied to 0. Right? 0 कब आएगा? या तो आपने किसी नंबर को 0 से any number multiplied by 0 will give you 0. So किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, या फिर किसी नंबर को अपने आप से ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा. So here the chances are either of these two. So जब भी 0 आए तो ये तो समझो कि शायद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ हो 0 से. आपको ये पता है कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 0 से, यहाँ पे इन सब में तो नहीं कर रहे हो. ये तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन 0 से नहीं है. तो यहाँ अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ किसी और से कर रहे होगे, यहाँ किसी और से कर रहे होगे, कुछ तो दूसरे नंबर्स हैं. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड व्हाट कैन बी द लिंक हियर. ये 0 से मल्टीप्लाइड है, ये किसी और से है, ये किसी और से है, किसी और से है, राइट? और ये 0 नहीं है. अगर यहाँ 0 है, ये 0 नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा होगा यहाँ पे. सो लेट अस keep that in mind and try to find out what may be the answer. So 0 will mean that the number may be multiplied by 0, right? Keeping that in mind, जो मैंने आपसे पहले कहा कि ये अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी नंबर्स तो 0 से नहीं हो रहे हैं, सो शायद यहाँ कुछ ना कुछ बढ़ रहे होंगे नंबर्स, क्योंकि अगर ये 0 है तो बाकी कुछ सेम नहीं हो सकते, कुछ बढ़ रहा होगा, इसीलिए, right? Let us try to see now. If it is multiplied by 0, then what? This should be, we can try this out. This is multiplied by 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6. May be possible, right? क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरों में और किसी से मल्टीप्लिकेशन है, और अगर एक में किसी और से है तो इसका मतलब कुछ तो इंक्रीमेंट या कुछ और हो रहा होगा. इट कैन नॉट बी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय like the same number, because here it is multiplied by 0. So if you try to see this, बहुत clear answer आता है आपके दिमाग में, right? This is 25 by 2, 16 by 3, 9 by 4, 4 by 5 and 1 by 6, right? ये तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 दिख ही रहा है. ये क्या है? This is 1, 4, 9, 16, 25. So what should this be? Think of it. What are these? These are all squares. So this should be what? 6 square. So 6 square into 1, that is 36. And this is 7 square into 0. So this is multiplied by 0, 7 square into 0. So this makes sense, and that is why this is 6 square into 1, which is 36. So this is how you can get the answer to this series. I hope this was an interesting question. इस question को आपको ध्यान में रख के यही रखना है, समझना है कि जब भी 0 आता है तो इसका दो ही मतलब हो सकता है. The number is subtracted from itself, किसी नंबर को उससे खुद से सब्ट्रैक्ट किया गया है, या फिर मल्टीप्लाई किया गया है 0 से. चांसेस 0 से मल्टीप्लिकेशन के काफ़ी होते हैं. ओके, सो 0 से अगर मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे दूसरे नंबर्स तो 0 से मल्टीप्लाइड नहीं है, तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है. इसलिए हमने दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या हो सकता है जिसको मल्टीप्लाई किया गया है with 2, with 3, with 4, and that is how we got this answer. I hope this is clear to you. Now let us take the next one. 3, 11, 38, 102, 4, 43. Again, you must try to see whether it is near to something, right?
ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। आइदर यू फाइंड द डिफरेंसेस, राइट, और डिफरेंस से अगर कुछ दिखाई देता है तो ठीक है, और अदरवाइज आप देखो कि क्या ये किसी स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स के आसपास हैं। तो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इट इज। इफ यू सी 3 कैन बी रिटन एज 1 + 2, ये सभी दिख रहा है कि किसी के पास है, किसी किसी नंबर के पास है। 100 + 2, 36 + 2, ये सभी स्क्वायर्स हैं। 1, 9, 36, 100, 441, ऑल दीज आर स्क्वायर्स। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट किसके स्क्वायर्स हैं। ये भी आपको पता है, ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 6 का, 10 का, 21 का, राइट। सो यहाँ आपको देखना है कि एक्चुअली सब में तो 2 ही ऐड हो रहा है, लेकिन ये नंबर्स में कौन सा रिलेशन है। लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज द रिलेशन हियर। सो यहाँ पे 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू that it should be a difference of 5. So 10 or 5. So 10 square, now you are taking plus 5, so 15 square आपको देखना है. So 15 square plus 2, that is what the answer will be. So the answer will be what? यहाँ पे आप ये भी देखो, definitely you should also see कि 15 के बाद अगर आप 6 add करते हो तो क्या, then are you getting this also? Because you have to check कि ये series का part है कि नहीं. तो 6 ऐड करने पे 21 स्क्वायर 441 डेफिनेटली आ रहा है. सो obviously this is a clear logic and you can get the answer there. So 15 square plus 2 is very clear. That means 225 plus 2, 227, and that is a part of the options also. So very very clear. Let's move to the next question. Here, if you see this question, it's a fraction, right? So let's try to see what is there in this question. Okay, इस क्वेश्चन को आप सेपरेटली भी कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग से देख के कर सकते हो. दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. सो लेट्स ट्राई टू सी हाउ टू गो अबाउट इट. आप न्यूमरेटर को अलग से देखो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, राइट. डज दैट रिंग एनी बेल? it should ring, right? Now coming to the next one. So अगर यहाँ पे +2 है, +5 है, तो यहाँ 2 का गैप है, तो it can be definitely +3 and +4. Okay, ये different type of question है. It has nothing to do with squares and cubes, right? लेकिन ठीक है, let us see this. Now this आपको लग रहा है कि न्यूमरेटर का तो आपको लॉजिक समझ में आ गया है. So now let us try to find the logic of the denominator. So this is +4. So 3 plus 4 is 7. यहाँ पे plus 10. Again, यहाँ पे 2 का gap है. So what can be there? Just think of it. It can be +4. So what else? And here, it can be definitely +4 to +6 and +8. But does that actually prove to be right for this? 7 plus 6, 13. 13 plus 8 is 21. It makes sense. And do we have this 7 by 13? Yes, we have it. I hope this is clear to you. This question has nothing to do with squares and cubes. We are moving on to other types of questions now, right? So it's not about squares and cubes. We have done enough of squares and cubes. Abhi, next. I think they have been enough for today, this session. So we have tried out different questions related to squares and cubes and some questions where you had another logic also, जिसके हिसाब से आप कर सकते थे squares cubes की logic भी और दूसरी logic भी, right? और last question आपने देखा एक fractions का question था, nothing to do with squares and cubes but still a simple question, right? Where you just found the differences. So keep trying. I hope you will be able to get much more mastery with series completion by trying out all these questions. Thank you.